बिल्कुल जी, एक मायरा, नवीन, मायरा, anybody, Fawad. Okay. Where is my camera? Any camera. Any camera. Yeah. Okay. Well, I think I have already. लेकिन फिर से मैं starting from Momina, I have to thank you. Thank you. I have blind faith in her, and so if my next few serials don't do well, you have to be. That's a lot of responsibility. Yes, that's a lot of responsibility. Yes. Lekin she just is so great as a person who can convince you, and then also जब आप उनमें अपना faith डाल देते हैं तो फिर she handles it well. And of course Farhat for writing. मैंने नहीं पढ़ा था really. जब पढ़ने लगी तो मैं Farhat was such a nice person, such a good person. She kept it going. I love that. And of course Sarmat Kusat, who I think we need to clap for Sarmat. Of course. And then of course Naveen and Berosa, Batika and Hina Paya, all the actors, and Sara, and a special thanks to Fawad because we really were so into our own worlds, and I don't know how this chemistry came about. It must be something about the physiology or something, right? It's your turn, Fawad. But thank you to the audience. I'd love to thank the audience. Thank you. बहुत शुक्रिया. I've said it before. It wouldn't have been possible without the team. Yeah. जो team बनी Yes. है, the whole family. It's actually worked like a family, and we faced hardships together. हमने मुश्किलों का भी सामना इकट्ठे किया और and now we're enjoying the success together, which is a very big thing. क्योंकि आमतौर पे होता है कि एक project खत्म होने के बाद लोग तितर बितर हो जाते हैं, negativity sprout कर जाती हैं, but this positiveness is actually has traveled a long way and still traveling. But other than that, other than Mobile Productions, Hum TV, the people who made this possible, the writer, the director, my fellow cast members and everything, I'd especially like to thank the audience, because मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि artist आधा जो है उसकी audience makes what the artist he becomes, whatever they become, that's the half the responsibility is on the audience. And without them, it's not possible. चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो whatever work I've done with Hum Television, चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो दास्तान हो, चाहे वो कोई film हो, चाहे वो anything. I think without their support, it's not possible. And above all, I think God is very kind. Yeah, God is very kind. And I truly am a believer now. And I'd like to seriously, my family who's put up with it, with me being out of the house, I know how difficult it's been on them. But I think, like Momina said, without the support of your spouse and a person in your life, nothing is possible. It's not. मेरे लिए भी ये possible ना हो पाता if my wife hadn't supported me so much, my family hadn't supported me so much, my son had not supported me so much, even though he's 4 years old, he understands where I'm gone and when I'm gone. So I thank you all. Thank you. Lovely, congratulations. Naveen. मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस आई थिंक सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा. मेरी पूरी टीम के साथ जो मैंने जितना भी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जितना भी हमारी गपशप हुई है इस पूरे प्ले में, आई हैव टू से जब मोमिना ने मुझे ये कैरेक्टर बताया था इस लड़की का, आई वाज वेरी अफ्रेड कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, ये नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव नहीं करना, मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर करना है. एंड आई फिगर्ड कि जब ऑन एयर हुआ प्ले और मुझे लगा कि सारा को बहुत नफरत मिली, लेकिन वो नफरत आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गया. वो सब प्यार आप लोगों का है. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, माई कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. हालांकि मुझे लग रहा था कि कोई प्यार नहीं करेगा, इसको सारे डांटेंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू थैंक सरमद बिकॉज आई थिंक ही मेड मी सो कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन कि मुझे कभी डर नहीं लगा और मुझे ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है. सो a huge thank you to you, to Momina, my cast. You know, these guys are awesome. इनके साथ मैंने फवाद के साथ जितने सीन किए हैं, हिना के साथ किए हैं, मायरा के साथ किए हैं. And a big thank you to all of you guys out there for making हमसफर so huge कि हमें खुद यकीन है, मुझे तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. And hopefully इंशाल्लाह आपको हमारे ड्रामे इसी लेवल के बल्कि इससे ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिले इंशाल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. Thank you so much for being a part of हमसफर. Thank you so much. Sarmad, you need to be here. Come on, yaar. Thank you. Khudafis karna everybody. Please, over here. आइए.
Thank you so much for being here. Sarmad, thank you so much for giving us such a great play. You're a great director. And Bhabhi, thank you so much. Rohit bhai, everybody. And bye-bye. Take care. हम सफर का सफर यहाँ पे खत्म एक तरह से तो हो रहा है, but we just wish This is the beginning. the beginning exactly of our new era, you know, for the television industry, and the credit goes to Hum TV again, the whole team, Sarmad and everybody. Or I just wish you guys. hosting it. Yeah, because Thank you, pleasure, and Hum TV देखते रहिए. अगले जितने plays आ रहे हैं बहुत अच्छे होंगे. इंशाल्लाह आप लोग enjoy करते रहेंगे. Thank you very much for being with us. खुदा हाफिज़. Okay, done. अभी हमने देखा है. It was an amazing episode. I just loved every point of it. हमसफर रॉक्स. मैंने अभी जो एपिसोड थी वो बहुत अच्छी थी. खिरद और अशर मिल जाते हैं. That's what everyone wanted to see. लेकिन अगर सारा नहीं मरती तो हमें इतना ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता. Episode was amazing and I'm so glad that Khairat and Usher came together. Humsafar is actually one of the best dramas that I've ever seen in Pakistan. हमने अभी लास्ट एपिसोड देखा है जो बहुत मज़े का था. और आई एम रियली हैप्पी दैट अशर और खिरत इन दी एंड मिल जाते हैं और इट्स अ हैप्पी एंडिंग. Amazing drama, very amazing cast. Everyone's done a fabulous job. I love this drama. I have been watching this drama since first episode and now it's going to be end and I just love Usher and Khairat. हमसफर की अभी एंडिंग देखने के लिए आए थे. was a very nice ending, happy ending थी. वह खिजर और वो माहिरा दोनों एक साथ हो गए थे. very nice, we really enjoyed it. It was a fun drama serial. Hope Hum TV comes up with better ones like these. सफर था हम सफर था. Please welcome Usher, Khairat and Sara. कोई अंदाजा नहीं था हमें कि ये सब कुछ ये बन जाएगा जो आप लोगों ने इसे बना दिया. I had made a commitment to a woman who, like Sarmad said, believes in people who have no faith in themselves. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे हमसफर का इतना साथ दिया.